Uh, is my voice breaking, everyone? Is it for everyone here? Now it's okay. Awesome. Thank you so much. Thank you so much. All right. Let me just start the presentation. Uh, okay. Uh, So, before starting the presentation, I will, love to interact with you. So, the very first question: what language would you guys prefer? Do you want Hindi? Do you want English? Do you want mix of both? Uh, and as well as okay, yeah, okay, Java. I was not talking about programming language, Kirtan, but more over the language we speak on the daily basis. So, English, okay. तो हम थोड़ा हिंदी और इंग्लिश ट्राई करके देखेंगे. All right. Okay, thank you so much. And can I know where are you guys from? मतलब कौन से city से हो first of all? So we can get to know each other here as well. Just like I'll start by myself. I live in Nagpur, Maharashtra. How are you guys are from? Okay. Bareilly, Asif from Nagpur, Shubham from UP. Okay, Chennai, Lucknow, Raipur. Oh my God, this is like the whole overall India is here itself. We can see that, right? And acha, and one more thing, we'll try to make it more engaged because I believe there are the very good people and the less people, so that we can try to engage more as much as we can. And I'll make sure कि आप लोगों को utility as a service क्या होती है इसके बारे में better insights मिल सके. ठीक है? So don't be just flower, wallflower, जो मतलब और engage नहीं कर पा रहे हो. So even if you want to turn on your camera, ask me question anytime. You can definitely just come out of with your question, and I would love to answer. Right. So here we start. Right. Thanks again for joining on the Sunday evening. I know हर कोई enjoy करता है, but आप लोग अगर यहाँ पर आए हो session attend करने, तो there must be like you are dedicated for your work and as well as the passion. Right. All the you can say uh, what I see, dedicated people do that. So start करते हैं. Like as all of you know, the topic of this presentation is build leaner application using utility as a service. तो किसी ने यहाँ पर utility as a service का नाम सुना है? I mean, we would have heard about platform as a service, application as a service, software as a service, infrastructure as a service. तो किसी ने यहाँ पर यूटास का कभी नाम सुन रहे हैं? काफी वियर्ड सा होगा ये तो पहली बार सुनने में. सो कैन आई गेट एन एक्नॉलेजमेंट कि किसी ने यूटिलिटी एज अ सर्विस नाम सुना है पहले इसके पहले प्रेजेंटेशन के? Yeah, I मे have. बी यस और नो. Yes, bhaiya. ओके. या अंकित, you have heard about what utility as a service is, right? Oh, basically the software as a service, infrastructure as a service that I have listened, but utility as a service, it's like first time, like for Yeah, me. cool. Oh, that's a goodness. That's my goodness to explain you what this is the new paradigm into the world. And if you are a developer and you are the one who are actually know a little bit about libraries kind of, तुम ज्यादा relate कर पाओगे यहाँ पर. ठीक है? तो start कर दे. Name is Sohail Pathan, and I am a developer advocate globally at Appy Hub. I have been contributing to my developer community space since more than 5 years, I can say that. And from there, I guess itself, I met with the Krupesh and a couple of community folks who I've been connected with. So here's me. What that is what I do at Appy Hub. My life focus around code, community, and content. And she's Bella. Her name is Bella. Yeah, from the photo you can see that she hates me a lot. So
That's all. And you can just anytime connect me. My username is you can say same on every platform. I am as Pathan. You can definitely come out, and I'll be more than happy to treat you with any questions you have. All right. So uh, let's decide. Okay, what are we going to learn today? It's about, first of all, utilities. Then we have we'll go through how a traditional developer has been solving around this, you can say, utilities. And how utility is actually going to cost. So always there is a always cost to action. If in this is a very basic fundamental of this world. When someone comes, if there is any solution, there must be a problem statement behind, right? If not, then people try to understand what's the problem we are, for what we are building the solutions as well. Okay. So we'll tell you what was the problem behind forming utility as a service, and then after solving it, how it's impacting, right? How it's actually impacting the developer experiences, developer pain points, right? So let's go through that. And what is the future roadmap of utility as a service? Okay. So defining utilities, first of all. So as a developer, when we build any application, I will try to relate with a very basic note taker application. Okay. जब हम एक नोट टेकर एप्लीकेशन बनाते हैं. भैया you are muted. Oh, I'm so sorry. Was I mute for the whole time? No, you were explaining about the utility and then it went and for I'm the so mute. sorry. This must be the tech glitch. All right, cool, cool. So let's go. Let's go on the utilities as a service. Okay. So as a developer, we basically whenever we build any application, जब हम कोई भी एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बनाने की कोशिश करते हैं, हम कंसिडर करते हैं नोट टेकर, बिकॉज हम बिगनिंग से नोट टेकर काइंड ऑफ एप्लीकेशन पे वर्क करते हैं. ठीक है. तो बहुत बेसिक फंडामेंटल होते हैं उस पे. वी वांट डेवलपर शुड एबल टू ऐड द टास्क. ठीक है. उसके बाद इफ इन केस हमें थोड़े फीचर्स ऐड करने हैं, वी व्हाट वी डू इज वी ऐड द कैलेंडर इनवाइट्स एज वेल. ठीक है. जैसे उन्होंने टास्क ऐड किया विद द टाइमिंग, you get that calendar, you can say, notification, right? And other than that, once you complete that task, you get this checklist as well. तो हम जब वर्क फ्लो बना रहे हैं, हम जब एक पूरा एल्गोरिदम बना रहे हैं, तो हमें यहाँ पर दो तीन चीजें पता चल रही है. द फर्स्ट इज हमें एक दो लाइब्रेरीज की जरूरत पड़ रही है. द वन इज लेट्स से कैलेंडर लाइब्रेरी. लाइक देयर इज अ कैलेंडर लाइब्रेरी अवेलेबल जो हमें नोटेकर एप्लीकेशंस में लगेगी, राइट? अदर देन दैट, अगर हम उसको सेव कर रहे हैं, तो वी ऑल्सो नीड टू एक्सेस विद द डेटा. एंड here comes जहां पर आप अपनी APIs यूज करते हो, right? As a developer, you use your APIs. And other than that, so at certain point you are dependent on the third party libraries. Okay. Which is very simple, very crucial factor of building an application. And that takes actually your time and cost, right? तो अगर हम यहाँ पर यूटिलिटीज की बात करें, इट्स अ वेरी फजी डेफिनेशन. The amount of the very sequence, or very you can say most occurring things that every application has to do, we categorize them in the utilities, right? uh, so जैसे मैंने बताया, integrating calendar is the very functional utility that you have to do in the note taker applications, right? If we try to build some e-commerce application, let's say Flipkart, ठीक है, तो वहां पर इनवॉइस जनरेट करना, इनवॉइस सेंड करना ईमेल के थ्रू, ठीक है, ईमेल वैलिडेट करना. जब हम ऑथेंटिकेशन बना रहे हैं, तो वहां पर ये चेक करना कि ईमेल और पासवर्ड करेक्ट है या नहीं है. ठीक है. यहाँ पर हम अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं एज अ डेवलपर. बट जब दिस इज वन थिंग, बट जब छोटी छोटी चीजें बहुत सारी हो जाती है, तो हमारा समटाइम्स वी लूज द फोकस ऑन द मेजर कोर प्रॉब्लम स्टेटमेंट. ठीक है, कि हमें सॉल्व क्या करना है, राइट? एंड वी ऑलवेज कम अप विद दिस काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस, और यू कैन से दिस काइंड ऑफ आइडिया, हे व्हाट इफ आई वुड हैव गेट ऑल ऑफ दिस ऑन द सिंगल प्लेट, कि मुझे ईमेल वैलिडेशंस भी हो रही है. तीन कैटेगरी में हमने डिवाइड कर रखा है यूटिलिटीज को. द वन इज जनरेशन. ठीक है. तो अगर हमने एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन का एग्जांपल लिया है, तो इनवॉइसेस एंड थंबनेल्स जनरेट करना, दिस इज द यूटिलिटी पार्ट. वैलिडेशन, जब हम ऑथेंटिकेशन सेक्शन बना रहे हैं, तो वहां पर ईमेल वैलिडेट करना, ठीक है, OTP सेंड करना.
these are the validation stuff, and then conversion stuff as well. ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन एंड कन्वर्जन, तो पीडीएफ टू वर्ड, लाइक जो भी हमारा इनवॉइस हुआ है उसको वर्ड टू पीडीएफ कन्वर्ट करना, एक्सेल्स कन्वर्ट करना, एंड काइंड ऑफ इवन दो समटाइम्स यू कन्वर्ट योर एचटीएमएल टू पीडीएफ एज वेल, राइट? तो ये जो छोटे छोटे टास्क है, इसमें डेवलपर अपना काफी ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करता है, और इन्हीं सारी चीजों को हम यूटिलिटी बोलते हैं, ठीक है? And this does apply on the very varying level of frequency, because whenever you try to build an application, these are authentication and kind of, which is very common, you have to integrate, right? And what you do, you either sometimes take the code from someone, or you try to build by yourself. So this is what we gonna know in the very next slide, कि as a developer हम लोग क्या करते हैं. Yes, Ankit, you can. भैया थोड़ा सा यूटिलिटी के लाइक सिंपल लेमन टर्म्स में बता सकते हो कि होता क्या है, जैसे अगर हम किसी को समझाना चाहें। ठीक है, तो मैंने ये एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर मुझे वर्ड टू पीडीएफ कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो आप जनरली क्या करते हो? लेट्स से यू हैव अ डॉक्यूमेंट वर्ड वाला, उसको पीडीएफ कन्वर्ट करना है, तो तुम क्या करते हो? या तो लाइक थर्ड पार्टी जो अपनी साइट्स होती हैं, तो उसमें वर्ड टू पीडीएफ की एक ऑप्शन होता है, तो वहां पर डायरेक्ट उन्होंने कोड लिखा होता है, सोर्स कोड, तो वो हाँ हाँ, ऑटोमेटिक देता है लाइक ठीक वर्ड है, से पीडीएफ। हम लोग एक थर्ड पार्टी वेबसाइट का यूज करके हम लोग अपना मतलब वर्ड फाइल अपलोड करते हैं, उसके बाद हम पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है, दैट्स ऑल। बट ये तो आप जनरल, ये तो कोई जनरल यूजर भी कर सकता है। हाँ जी, यस सर, ये जनरल यूजर्स के लिए ही है। जनरल यूजर्स के लिए ही है, ठीक है, बट अगर कोई डेवलपर है तो उसको तो कोई लाइब्रेरी लगेगी। हाँ लगेगी तो सही है फिर, उसके मतलब लिए तो थोड़ा इंटरनेट। सा ही होना प्रोफेशनल ही होना चाहिए ना। हाँ हाँ, बेसिकली तो ये जो छोटा, ये काफी छोटा सा टास्क है, वर्ड टू पीडीएफ कन्वर्ट करना, हाँ जी, ठीक है। और बेसिक सिंपल, आप लोग सब लोग यहाँ पर यूपीआई यूज करते हो। यस सर, यस सर। यूपीआई में क्यूआर जनरेट करना एक बहुत एटॉमिक ऑपरेशन है, मतलब हर किसी को क्यूआर चाहिए। हाँ जी, हाँ हाँ, उसके लिए ठीक है। तो उसको उसको तो वो क्या हम उसको बोल सकते हैं, वो एक यूटिलिटी है करके। हाँ क्यों नहीं। यूटिलिटी, एग्जैक्टली, राइट। तो अब समझे डेफिनेशन, जो बहुत ही इसेंशियल और छोटा सा टास्क होता है हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस का, हम उसको कहते हैं यूटिलिटी। ऐसा का मतलब सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, छोटा हाँ, पार्ट। खाना खाए। इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, बट बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, जैसे ठीक है। क्यूआर कोड इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, बट वो जनरली यूज होता है लाइक। एग्जैक्टली, मतलब उसके बिना तो काम रुक जाएगा ना हमारा, हाँ जी, हाँ जी। राइट। जैसे रिसिप्ट जनरेट करना, सॉरी, जैसे रिसिप्ट जनरेट करना सर। एग्जैक्टली, जब आप कोई ई कॉमर्स एप्लीकेशन, जब आप फ्लिपकार्ट से कुछ ले रहे हो, तो आपको इनवॉइस तो चाहिए होगी, ठीक है, राइट। यस तो सर। और जब जब हर ऑर्डर होगा, कोई भी ऑर्डर होगा, तो उसको इनवॉइस बनेगी, विच इज लाइक एन एटॉमिक ऑपरेशन विच कैन नॉट बी स्टॉप्ड, राइट। यस भाई। हाँ, तो इसको हम एक यूटिलिटी कैटेगरी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो व्हाट बेसिकली यू डू, तो हम चलो, आप सबको समझ गए यहाँ पर कि यूटिलिटी क्या होती है। हाँ जी भैया। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड देन, राइट। तो जो एक डेवलपर होता है ना, ठीक है, बेसिकली अगर मुझे कोई ई कॉमर्स एप्लीकेशन बनाना है, तो मेरे पास दो रास्ते होते हैं। दो रास्ते ये होते हैं कि अगर लेट्स सपोज कि मैं कोड कर रहा हूँ गोलैंग में, ठीक है, और गोलैंग में अगर कोई लाइब्रेरी अवेलेबल नहीं है, तो व्हाट यू गाइस गोना डू? लैंग्वेज चेंज कर देंगे। नहीं, बट जहाँ रिक्वायरमेंट पर गोलैंग की है, अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है गोलैंग में ही बनाना है, फिर क्या करोगे? लाइब्रेरी यूज करेंगे। फिर तो थर्ड पार्टी साइट की यूज कर पाएंगे। दो चीज होती है, ठीक है। एक तो डेफिनेटली अनुभव इज सेइंग दैट हमको इंपोर्ट करनी पड़ेगी लाइब्रेरी, ठीक है, बट व्हाट इफ इन केस अगर हमारे पास वो लाइब्रेरी अवेलेबल ही नहीं है, लेट्स सपोज कि हमारा जो यूज केस है, जिस तरीके से हमें बनाना है, वो लाइब्रेरी अवेलेबल नहीं है, तो व्हाट कम्स फर्स्ट? तुम फर्स्ट ऑफ ऑल अपना ट्राई करोगे कि मैं खुद बना लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे यूज केस मैच नहीं कर रहा, इज इट करेक्ट? हाँ जी भाई। राइट। दो टू थिंग, अगर नहीं है अवेलेबल, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि मुझे खुद से बनाना है, ठीक है। एंड इफ नॉट, देन
हमारे पास देर आर हाईली चांसेस कि देर विल बी एन एक्सटर्नल लाइब्रेरी विल बी अवेलेबल। ओके, तो दो तरीके से सॉफ्टवेयर डेवलपर्स डील करते हैं इस काइंड ऑफ यूज केसेस में, ऐसे प्रॉब्लम स्टेटेड में, ठीक है। बट देर आर यू कैन से देर आर सम प्रॉब्लम्स, और वही प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे कि क्यों थर्ड पार्टी लाइब्रेरी जो अवेलेबल है वो हानिकारक तो नहीं कह सकते, बट लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम देती है हमें। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो व्हेन वी से कि जब हम खुद से टाइम इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं, तो दिस इज गोइंग टू बी द टाइमिंग कंज्यूमिंग, तुम्हारा बहुत सारा टाइम जाएगा उसको बनाने में, दैट इज द वेरी फर्स्ट स्टेप। एंड सेकेंड कि लेट्स सपोज कि उसमें कल जाके एक नया फीचर ऐड करना है, तुमने लाइब्रेरी बनाई थी वर्ड टू पीडीएफ कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। अब तुम्हें उसी सेम लाइब्रेरी में HTML.html भी कन्वर्ट करवाना है, ठीक है। और लेट्स से कि यू नो डॉक टू इमेज कन्वर्ट करवाना है उसे, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, डेफिनेटली देयर आर टू चांसेस अवेलेबल, फिर से ट्राई करो कि कोई एक्सटर्नल सर्विस है क्या अवेलेबल, बट उसमें भी एक दिक्कत है, अब तुम अपने एक कोड के अंदर में दो लाइब्रेरीज यूज कर रहे हो, छोटा सा वेट ऐड कर रही हो, ठीक है। करने वाली उसमें एक फीचर ऐड कर देता हूँ कि उसमें वो दो ऑप्शन पूछेगा कि उसको पीडीएफ में बनाना है या फिर इमेज में कन्वर्ट करना है, ठीक है। दैट्स ऑल यू डू। एंड हियर कम्स, जब आप सेकंड ऑप्शन यूज कर रहे हो, इट इज मेंटेनिंग कॉस्ट, ठीक है। एंड सॉफ्टवेयर डेवलपर टेक्स मनी फॉर दिस। So what are you investing? You are investing time, and second you are investing money for just small tasks, ठीक है। दिस इज क्लियर। एंड ठीक है, हमने खुद से बना लिया, हमारी खुद की यूज केस वो हो गई, हमने टाइम भी दे दिया, हमने पैसा भी लगा दिया, दैट्स वेल डन, ओके ओके। नाउ जब हम कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी से यूज कर रहे हैं, वी अगेन गोइंग टू द एग्जांपल कि हमें गोलैंग की लाइब्रेरी चाहिए थी, बट गोलैंग की लाइब्रेरी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। हमें नोड.जेएस की लाइब्रेरी अवेलेबल है, तो वहां तो दिक्कत हो गई। अब मैं अपने पूरी टीम को ये कहे थोड़ा होगा कि आप ठीक है, ये लाइब्रेरी गोलैंग में अवेलेबल नहीं है, हमें नोड.जेएस वाली लाइब्रेरी मिल रही है, तो आप एक काम करो, कोड पूरा चेंज करके नोड.जेएस में कर लो। अगेन वेस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। और ये जो लाइब्रेरीज होती है ना, जब आप कोई गिटहब से डाउनलोड करते हो या फिर एनपीएम, अगर आप नोड.जेएस डेवलपर हो तो एनपीएम जैसे आप इंपोर्ट करते हो लाइब्रेरीज, ये लाइब्रेरी भी किसी ने बनाई होती है, ठीक है। समटाइम्स कोई इंडिविजुअल बना रहा होता है, समटाइम्स कोई कंपनी बना रही होती है, ठीक है। और वो लोग इसको एज अ ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट कर देते हैं। बट दिक्कत यही होती है कि ये लाइब्रेरीज हाईली अनमेंटेन्ड होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। वाई अनमेंटेन्ड? बिकॉज वो लोग अपने तरीके से बनाते हैं, और सेकेंड चीज की, अगर वो ओपन सोर्स है, देयर आर हाईली चांसेस कि ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन से उसमें फीचर्स तो ऐड होंगे, बट अगेन देयर विल बी प्रॉब्लम कि it would be unmaintained. Sometimes it doesn't match when you build a software for, we can say, infrastructures and large level pay. If Google is actually working on one of the library, they have to do a hell lot of research to understand, okay, whether this library is secure or not, whether this will gonna help us in the long term or not, ठीक है। तो तीन चार क्वेश्चंस आते हैं डेवलपर के दिमाग में जब वो लाइब्रेरी यूज करते हैं, बट एनी हाउ व्हाट वी ट्राई टू डू, वी एज अ डेवलपर ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। अभी ये सॉल्व हो जाए, कल अगर फट भी गया कोड तो देख लेंगे क्या होता है, तो ठीक है। These are all the stuff as a developer we have to do. And you understood a little problem statement when are we trying to build ourselves, this is time consuming and maintaining cost, it takes maintaining cost. And the second, when we depend on the external libraries, there is the tech stack limitations, and as well as we don't know whether this library are maintained or not, ठीक है। So which is directly proportional to the bloated you can say bloated microservice. ओके, नाउ लिसन वेरी केयरफुली हियर, ठीक है। ये थोड़ा सा लार्ज एस्पेक्ट में मैं ट्राई का एक्सप्लेन करूंगा, बिकॉज वंस यू विल गो एंड बिल्ड एन एंटरप्राइजेस एप्लीकेशंस, जब आप कंपनीज में वर्क करते हो, इस तरीके से सॉफ्टवेयर्स क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर दैट exist. The one is monolith and the second is microservice. Some of you might be known here, but मैं try to explain in a very layman term. जो मोनोलिथ होता है, मोनोलिथ में क्या करते हैं, हम सारा का सारा कोड बेस हमारा एक ही इसमें रखते हैं, एक ही सर्वर में रखते हैं हमारा, ठीक है। तो जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही है, लेट्स सपोज कि हमने एक क्या बनाया, हमने फ्लिपकार्ट बनाया, ठीक है, हमने फ्लिपकार्ट बनाया,
तो फ्लिपकार्ट में क्या किया, फ्लिपकार्ट की पेमेंट सर्विस हो गई, फ्लिपकार्ट की डिलीवरी सर्विस हो गई और फ्लिपकार्ट की कैटलॉग सर्विस हो गई, एंड जितनी भी सारी चीजें हैं वो तुमने एक सर्वर में डाल दी। एक सर्वर में डालने के बाद तुमने क्या किया कि अब उस पर प्रेशर आ गया, ठीक है, अब उस पे वो पूरे एक सर्वर पे प्रेशर आ गया। सो लेट्स सो अगर एक साथ 1 लाख ऑर्डर्स आ गए तो देर हाईली चांसेस कि यूजर्स को बहुत वेट करना पड़ता है, ठीक है, देर विल बी हाईली चांसेस कि देर विल बी अ लिटिल डिले, राइट। एंड टू बेसिकली overcome this kind of problem, you shift from monolith to microservices, right? तो what are the advantages of microservices here? माइक्रो सर्विस में अपने हमें दिख गया कि जब फ्लिपकार्ट है तो फ्लिपकार्ट में 4 टाइप की सर्विसेज है जो हम उसको अलग अलग सर्वर्स पे भेज सकते हैं, ठीक है। तो जब यूजर आ रहा है तो कैटलॉग की जो सर्विस होती है दिखाने की, लेट्स सपोज कि हमने वो एक सर्वर को दे दिया, सर्वर ए यू हैंडल द कैटलॉग सर्विस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पर आए, नेक्स्ट पे आने के बाद हमने देखा कि कार्ट सर्विस है, जब हमने प्रोडक्ट को ऐड कर दिया हमारे कार्ट में तो हमने उसको कार्ट में रख दिया, हम कह रहे कि जो बी सर्वर है वो कार्ट फैसिलिटीज अवेल कर लेगा, ठीक है। देन कम्स पेमेंट वाला मॉड्यूल, ठीक है। तो जो पेमेंट वाली सर्विस है वो हम एक काम करते हैं, वो हमें एक माइक्रो सर्विस को दे देते हैं, ठीक है। सर्वर सी विल हैंडल द पेमेंट सर्विस, एंड देन एक और सर्वर है जो कि हैंडल कर रहा है हमारा लॉजिस्टिक एंड डिलीवरी सर्विसेज, ठीक है। तो जैसे ही तुम्हारा ऑर्डर प्लेस हो गया, वहां पर हमने जो हमारा डी सर्वर था उसको बोला कि आप हमारा लॉजिस्टिक हैंडल करोगे। सो हियर यू सी द थिंग्स आर डिवाइडेड इनटू द लिटिल माइक्रो सर्विसेज। तो अगर कहीं एक भी दिक्कत आती है तो यू कैन इजीली सॉल्व, तुम्हें पता लग जाएगा कि ठीक है पेमेंट वाला मॉड्यूल नहीं वर्क कर रहा, तुम तुरंत क्लोन करोगे और उसको दूसरे इस पे भेज दोगे, ठीक है। दैट्स व्हाट यू गोना डू, एंड दिस इज वेयर यू कम्स एज अ basically in the microservice architecture, ठीक है। This is how traditional software development step works. So now getting back to why utilities sometimes affect your code bases, ठीक है। तो when we take the example of file conversion, तो जब हमें ये था कि हमें नीड थी वर्ड टू पीडीएफ कन्वर्ट करने के लिए, तो तुम लोग ने एक लाइब्रेरी बनाई, एंड देन उसके बाद तुम्हें वर्ड टू इमेज भी कन्वर्ट करना था, तो तुमने उसके पे फीचर ऐड किए। तो जब तुमने फीचर ऐड किया उस पे तुमने 3-4 चीजें ऐड करी। तुमने फर्स्ट ऑफ ऑल उस पे फीचर तो डेफिनेटली ऐड किया, तुमने उसमें एक्स्ट्रा लाइन ऑफ कोड बढ़ाया, ठीक है। तुमने उसमें एक्स्ट्रा डिपेंडेंसी भी बढ़ाई, क्योंकि तुम्हारा हमेशा एक डिपेंडेंसी दूसरे पे वर्क रहती है। तो जब वेरी बेसिक एग्जांपल, जब तुम npm कोई भी लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हो तो आपका जो लाइब्रेरी है वो स्टोर होता है, पूरा का पूरा लाइब्रेरी स्टोर होता है हमारा नोड मॉड्यूल्स में, ठीक है। और वो फोल्डर सबसे ज्यादा भारी होता है, ठीक है। यू कैन सी समटाइम्स इट गो फॉर द जीबी एज वेल, अगर वो बड़ा एप्लीकेशन है तो, ठीक है। तो तुमने धीरे 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 अपनी चीजें बढ़ाने की कोशिश करी, एंड दैट्स हाउ योर कोड इज गेटिंग बिग एंड एज वेल एज इट्स गोना टेक द स्पेस। एंड व्हेन यू एक्चुअली गोइंग टू ट्राई टू होस्ट दिस कोड, जब तुम्हारा एप्लीकेशन तुम होस्ट करने का ट्राई करोगे, इट विल टेक द रिसोर्स, एंड रिसोर्स विल बी इन फॉर्म ऑफ स्टोरेज, ठीक है। तो क्लाउड सर्विस क्या प्रोवाइड करती है तुम्हें? रैम, मेमोरी बेसिकली, एंड स्टोरेज, राइट, एंड प्रोसेसर। तो धीरे धीरे अगर तुम स्टोरेज बढ़ा रहे हो अपना एक टाइम तक जाने के लिए, तो तुम उस पर रिसोर्स ऐड कर रहे हो, विच विल गोना end up being getting the cost as well, right? So that's what how the traditional library things works as of now, कि जब वो छोटा होता है, when you see here without embedding utilities, which is very small, but slowly when you try to add more features, the code base becomes big, ठीक है। तुम्हें छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी लगती है सर्वर पे जाने के लिए, which is going to end up with the time, with the cost and a lot of efforts, ठीक है। खत्म नहीं होते एफर्ट्स यहाँ पर। यूटिलिटी लाइब्रेरी जब हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर, राइट। तो एक बहुत छोटा सा एग्जांपल हम बिल्कुल यहाँ पर वो करेंगे कि एक माइक्रो सर्विस है हमारी पेमेंट वाली, ठीक है, जिसका काम है बेसिकली क्या करना, 100 ऑर्डर्स आए तो इनवॉइस प्रिंट करना, 200 ऑर्डर्स आए तो भी इनवॉइस प्रिंट करना, 1000 ऑर्डर्स आए तो भी इनवॉइस प्रिंट करना। बट मैंने जो अपना सर्वर बनाया हुआ है, ठीक है, लेट्स सपोज कि मैंने जो अपनी माइक्रो सर्विस बनाई हुई है हमारी इनवॉइस वाली माइक्रो सर्विस, मैंने बस उसे यही चीज ली है कि
तुझे ना क्या करना है, जब तुम्हें ऑर्डर्स आए ना, यू हैव टू प्रिंट दैट, ठीक है, यू हैव टू मेक द इनवॉइस आउट ऑफ इट, ठीक है। मैंने उसे ये नहीं बताया है, और मैंने उसे स्पेस भी उतना दिया हुआ है कि ठीक है, अगर 10 लेट्स सपोज कि एक बंदे ने गेमिंग पीसी बुला लिया, तो गेमिंग पीसी के अंदर उसने कितने कंपोनेंट्स ऐड कर दिए, 25-30 कंपोनेंट्स ऐड कर दिए, राइट। एंड देन उसका इनवॉइस जनरेट हो गया, तो 30 ऑर्डर तक, यू कैन से एक एक इनवॉइस में 30 ऑर्डर्स तक वो माइक्रो सर्विस झेल सकती है, ठीक है। एंड लेट्स से एक टीम ही आ गई प्रोफेशनल गेमर्स की, ठीक है, और उन्होंने ऑर्डर कर दिया फ्लिपकार्ट से, काइंड ऑफ यू कैन से, और पेमेंट्स यू कैन से ई कॉमर्स एप्लीकेशन से 100 सीपीयूज, 100 रैम, 100 हार्ड डिस्क, 100 काइंड ऑफ, तो क्या ये पेमेंट सर्विस झेल पाएगी, मतलब इतना लोड एक बार में? क्योंकि मैंने तो उसे प्रोविजन किया था सिर्फ छोटे से अमाउंट के लिए, सो वेरी यू सी, मैंने उसे प्रोविजन किया था 0.5 वर्जन ऑफ सीपीयू एंड 0.5 यू कैन से जीबी ऑफ मेमोरी, राइट, जिसमें दैट इज 50 लाइन्स ऑफ आइटम्स, 50 लाइन आइटम्स, बेसिकली 50 आइटम्स एक बार में आ सकते हैं, ठीक है। बट अब मेरे पास अनएक्सपेक्टेड काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट आ गई 100 ऑर्डर्स की, तो मैं क्या करूंगा? डेफिनेटली मैं वर्टिकली स्केल करूंगा उसको, ठीक है। सॉरी सॉरी, मैं ट्राई करूंगा उसको हॉरिजेंटली स्केल करूं, राइट। तो दैट्स व्हाट प्रॉब्लम्स कम्स, ठीक है। मैंने उसको 100 लाइन के लिए कर लिया, फिर मुझे एक और ऑर्डर आ गया हजार हजार कंप्यूटर्स का, ठीक है, 1000 इनवॉइसेस बन रही है, और अब मेरा जो सर्वर है वो सिर्फ 200 ही ले सकता था, तो मैंने क्या किया, उसको 1000 पे रख दिया, ठीक है। मैंने 1 सीपीयू ले लिया और 2 GB ऑफ मेमोरी दे दिया। तो नाउ if you will understand the situation here, I'm making sure that मेरे पास बैकअप हो उतने ऑर्डर्स के लिए, ठीक है, मेरे पास बैकअप हो कि कभी भी 100 कंप्यूटर्स का अगर मुझे ऑर्डर आ गया तो मैं वो झेल पाऊं, मेरा वो सर्वर झेल पाए। तो मैं अपना बैकअप तो रेडी करके रख रहा हूँ, आई डोंट वांट माय कस्टमर शुड सफर इन एनी वे। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी बहुत ज्यादा कॉस्ट इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। जब आप एक हाई कॉन्फ़िगरेशन का पीसी लेते हो अपने AWS या फिर EC2 जो भी क्लाउड सर्विसेज पे आप प्रोवाइड कर रहे हो, जब आप i3 से i5 लेते हो, यू हैव टू पे अ लॉट, राइट, you will end up paying the cloud costing. Why? Just for the sake of 1 to 2 orders which is coming in the maybe a month, ठीक है। रोज तुम्हें 1000 कंप्यूटर या 100 कंप्यूटर्स के ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे, राइट। Yeah, definitely Salman, I'll try to definitely share the the presentation, but I would love if you can listen this very well, because at the end of the presentation you will blow with your mind, okay, how does this works now, right? Yeah, Ankit, you can. भैया जो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग होती है वो बेसिकली लाइक हम कंप्यूटर्स को एडिशनल डाल देते हैं ना, मतलब एक्स्ट्रा कंप्यूटर डालते रहते हैं जैसे हाँ, एक, क्लोन बनाते रहते हैं हमेशा। ठीक है, और वर्टिकल में मतलब उसी एक पर्टिकुलर कंप्यूटर में उसकी जीबी रैम सब कुछ बढ़ा देते हैं, राइट ठीक है। राइट, उसका वर्जन लाइक लेट्स सपोज कि वो i3 है तो उसको हम i5 कर देंगे, 2 GB है तो उसको हाँ जी, 4 GB कर देंगे, काइंड ऑफ। बट कंप्यूटर हमारा सेम ही रहेगा, बट उसमें कंप्यूटर, हाँ, हार्डवेयर कंप्यूटर, रिक्वायरमेंट, ठीक है। राइट। तो वही है ना, तुम कॉस्टिंग दे रहे हो, बट इसमें हम हॉरिजेंटल स्केलिंग नहीं कर सकते ना, क्योंकि अगर हॉरिजेंटल, तो तुम्हें i3 लिया था, आपको जो 1:1 हो रही थी वो into 2 हो जाएंगी, विच इज हाई हाई कॉस्ट, राइट। हाँ जी, तो इससे अच्छा है कि मतलब अलग ही कंप्यूटर लेके उसको हाँ कॉन्फ़िगर एग्जैक्टली, करके जोड़ वर्टिकल दो। स्केलिंग करते रहे, उसको वर्टिकल स्केलिंग करते रहे। बट इसीलिए दैट्स व्हाई द लाइन स्पेसिफिक है कि हम यहाँ पर इस काइंड ऑफ इश्यूज को हॉरिजेंटल स्केलिंग से एड्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि हॉरिजेंटल स्केलिंग भी out of our pocket. So this is where utility as a service comes into the picture to rescue you, basically. I will definitely gonna listen to that, but I hope you guys understand कि किस तरीके से क्लाउड कॉस्टिंग लगती है जब हम धीरे धीरे स्केल करने की कोशिश करते हैं, राइट। और कहाँ हम एज अ डेवलपर्स कॉस्ट बचा सकते हैं यूजिंग यूटिलिटी एज अ सर्विसेज। तो राइट, यू गाइस अंडरस्टूड दिस। हम एक स्कोप दे देते हैं, 100 ऑर्डर्स आ रहे हैं तो यू कैन हैंडल दैट, 200 ऑर्डर्स आ रहे हैं तो 200 ऑर्डर यू कैन हैंडल, एंड 1000 आ रहे हैं तो 1000, बट over the period of time you have to make your machines available to get that kind of load. So, and here's why, if you read this line, essentially that would imply that we are over provisioning the resources,
right? You are actually giving a lot of cost in the cloud, which will be mostly idle for majority of the time. महीने में शायद एक दो ऑर्डर्स आएंगे आपको, बट उसके लिए आप लोग 1000 का प्रोविजन करके दे रहे हो उसको, एंड एंटरिंग द सेम सेट विल कंप्लाइंट मोर मोनोलिथ, ठीक है? अगेन आप वर्टिकल स्केलिंग रख रहे हो, आप हमेशा अपने सीपीयू को बढ़ाने कर रहे हो, एंड दैट कम्स अंडर द मोनोलिथ पार्ट मोस्टली, राइट? So what will it end up? It will end up in getting the cost multiplies, right? Okay, this is a huge problem. The day you will have 1 million users on the platform, you will have to bear the cost as well, okay? But as a developer or as a SaaS, we can help you to reduce that cost from 100% to 10%, right? This is what तो हमने देख लिया कि जब हमें जरूरत पड़ रही थी यूटिलिटी एज अ सर्विस, नॉट यूटिलिटी एज अ सर्विस, बट जब हमें कोई भी लाइब्रेरी की जरूरत पड़ रही थी, वी हैड टू ऑप्शंस. द वन इज वी वर ट्राइंग टू बिल्ड बाय आवरसेल्फ, ठीक है? And the second, we were trying to if we can't build, if we don't have that much time and space and we can say that expertise, we depend on external. But again, both have pros, both have cons, right? Both have pros and both have cons. So here comes the services, right? Which is going to be very interesting for all of you. So listen this very carefully. तो हम यहाँ पर यूटिलिटी एज अ सर्विस को डिफाइन कर रहे हैं कि व्हाट इफ आई हैव टू जस्ट फोकस ऑन माय कोर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ठीक है? मुझे यूजर ने क्या बोला कि मुझे फ्लिपकार्ट बना के चाहिए, ठीक है? Sorry, I'm using this wrong word. A client came to you and client saying that, hey, I have to make another Flipkart, ठीक है? और बहुत बड़ा टास्क है वो बनाना, देन एंड जिसमें टाइम ड्यूरेशन एंड टाइम कॉस्ट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है? तो जो ये छोटी छोटी चीजें है ना हमारी, क्या मैं उसको किसी और को दे दूं, ठीक है? पेमेंट सर्विस, पेमेंट इनवॉइस बनाना, फाइल जनरेट करना, फाइल वैलिडेट करना, ठीक है? तो ये अगर सारी छोटी छोटी चीज मुझे एक कैटलॉग में मिल जाए, राइट? जब जब तुम हम लोग कोई डिनर वहां पर जाते हैं रेस्टोरेंट में, तो लेट्स से इफ यू हैव टू फ्रेंड्स हु ईट्स वेज एंड नॉन वेज, ठीक है? बट तुमने उसको लेके चले गए नॉन वेज रेस्टोरेंट में, राइट? तो व्हाट ही थिंक्स कि यार इसने सिर्फ अपने बारे में सोचा और यहाँ पर मुझे वेज नहीं मिलेगा करके, ठीक है? आई एम ट्राइंग टू गिव एन एग्जांपल. बट व्हाट इफ उसी रेस्टोरेंट में यू हैव टू डिफरेंट ऑप्शंस, यू विल गेट वेज एज वेल, यू विल गेट नॉन वेज एज वेल एंड वीगन एज वेल, ठीक है? जो 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 नॉट इवन दूध भी नहीं पीता, तो उसके लिए वीगन फूड भी चाहिए हमें. तो एक ही रेस्टोरेंट में अगर ये 3 टाइप के फूड मिल गए, तो दैट्स अ चेरी ऑन अ केक, ठीक है? यहाँ आपका क्या बच गया? यहाँ आपका टाइमिंग भी बच गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टाइम बच गया तीनों का, कि आपको अलग अलग जाके खाना तो नहीं खाना पड़ रहा, राइट? तो यहाँ पर वी हैव दिस काइंड ऑफ कैटलॉग, एपीआई कैटलॉग, जहां पर यू गेट ऑल दिस काइंड ऑफ APIs अवेलेबल, ठीक है? एंड एज अ डेवलपर, API is the way you communicate with every services, every different services, ठीक है? तो even if you are interacting with your database, you use the commands create, create, insert kind of, right? And this is in form of APIs only when you interact with your backend database, right? So when I'm saying that कि मुझे सर्वर की कॉस्ट ही नहीं बियर करनी है, I don't want to bear the cost of server or you can say a microservice. What I want to say, 50 ऑर्डर है, 100 ऑर्डर है, 200 ऑर्डर है, I don't mind, ठीक है? I don't mind. I'm giving this responsibility to the external services available who will actually going to take that, right? I'm going to push through the API and I'll get the response, ठीक है? Doesn't matter if 1000 orders, I'm giving you the data, you have to give me the invoice back, that's all. तो यहाँ पर ना आपको जरूरत पड़ी आपके थर्ड पार्टी API डाउनलोड करने की और इंसर्ट करने की, the way of importing, not even need to build by yourself as well, ठीक है? And you don't have to be worry about maintaining that, ठीक है? तीसरा एडवांटेज ये हो गया. And the fourth advantage is it's equivalent or you can say available in all the tech stack. Node.js, Golang, Kotlin, Flutter, सबके लिए available होगी, ठीक है? Which is
a relaxation to a developer's mind कि ठीक है, I don't need to be worried about this all the small utility parts. This can be taken care by someone else, and I can focus on my business problem statement. I can definitely focus on my business problem statement. And here comes the utility as a services part, right? So uh, uh, any downside of using UT? So I again told you that okay, there are highly chances that there will be good, and there are two sides of any coin. You can say pros and cons, right? So there are still problem with the utility as a services as well, even though which is more cost effective and most easy to use. Uh, you can see that fragmentation, like we can say that हर यूटिलिटी शायद आपको नहीं मिल पाएगी अलग अलग वेबसाइट पे, ठीक है? मतलब लेट्स सपोज कि पीडीएफ वाली यूटिलिटी एक वेबसाइट पे अवेलेबल है, एक स्टार्टअप के पास अवेलेबल है, और जो क्यूआर वाली एपीआई है वो दूसरे स्टार्टअप्स के पास अवेलेबल है. तो आप क्या करोगे? आप दोनों को साइन अप करोगे और आप उनको पेमेंट करोगे मंथली बेसिस पे, इवन दो यू आर जस्ट यूजिंग वन एपीआई, राइट? इंक्रीज कॉस्ट एंड टाइम, ठीक है? अब लेट्स से ए ऑर्गेनाइजेशन इज गिविंग यू पेमेंट एपीआई एंड बी ऑर्गेनाइजेशन इनवॉइस एपीआई, ठीक है? क्या पता दोनों के डॉक्यूमेंटेशंस बहुत डिफरेंट हो, ठीक है? तो अगेन यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम इन अंडरस्टैंडिंग द डॉक्यूमेंटेशन एंड इम्प्लीमेंटिंग इन योर सोर्स कोड एज वेल, राइट? हियर कम्स अगेन कॉस्ट एंड टाइम. तुम्हें बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, ठीक है? सब ऑप्टिमल सब्सक्रिप्शन यूटिलाइजेशन. Again, like you have to add your credit card to multiple organization to use the APIs as well, ठीक है? एक certain level के बाद तो आप फ्री वर्जन नहीं यूज कर सकते हो, राइट? तो आपको पे करना पड़ेगा जब आप अपने क्लाइंट को सॉफ्टवेयर डिलीवर करोगे, बिकॉज यू डोंट वांट कि ही हैव एनी एक्सपीरियंस विद कॉस्ट एंड प्रॉब्लम्स. तो ये चीज हो गई. एंड अदर देन दैट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंप्लायंस, ठीक है? सो not like a college project जहाँ पर security matter नहीं करता, but when you build an enterprise software or for the client, security is a lot of big concern, ठीक है? No one wants to share the data with anyone, right? Everyone wants to host their own data either on their own servers or maybe a trustable organization. So whenever you provision for any cloud services, you get this you can say service, we call it service level agreement, SLA, जहाँ पर आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप ऑर्गेनाइजेशन के कंप्लायंसेस पे ट्रस्ट करते हो कि ये डेटा कहीं बाहर नहीं जाएगा, ठीक है? ये डेटा कंट्री के बाहर नहीं जाएगा, ये डेटा किसी को सप्लाई नहीं होगा. सिक्योरिटी का बहुत बड़ा कंसर्न होता है व्हेन यू बिल्ड दिस काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, राइट? तो वेरी बेसिक एग्जांपल, व्हाई वुड फ्लिपकार्ट वांट टू शेयर हिज डेटा विद Amazon? No one wants to share their customers data, right? And even though Flipkart and Amazon both on AWS, so they do have to trust on service level agreement that they're not going to share the data with anyone, right? And here comes compliances and everything. So if you are trusting on some organization who can going to handle your data, you have to trust on their compliances. And what if that makes a fraud? What if your data, you see a lot of news on the daily basis that you got data breach recently. You can say credit cards ka data spill ho gaya, kind of. So how will company gonna react on it? If there is any loss that will happen, who will actually going to bear it, right? तो ये सारी चीजें भी आती हैं जब हम ट्रेडिशनली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे वर्क करते हैं, काइंड ऑफ. तो managing subscription, managing data compliances again is a pain in the ass, right? To and have to invest a lot of time. Considering this, जब हमने खुद का बिल्ड किया तो थोड़ी प्रॉब्लम थी, कुछ प्रोस थे कुछ कॉन्स थे. जब हमने एक्सटर्नल लाइब्रेरी यूज करी तब भी प्रोस थे तब भी कॉन्स थे. एंड देन जब हम यूटिलिटी एज अ सर्विस पर आए तभी भी हमें थोड़े प्रोस दिख रहे हैं और कॉन्स दिख रहे हैं, ठीक है? हाउ कैन वी हैंडल दैट? द मेजर इंपॉर्टेंट इज देयर एनी वे आउट? So yes, as a developer, what are my requirements are? I need a unified catalog of services, utilities. जितनी भी utilities और software developer use करता है, ठीक है? बहुत बेसिक सा है. आई बिलीव हर किसी को ईमेल्स आते होंगे, राइट? तो जब भी एक ईमेल, लेट्स सपोज सेंडग्रेड, ठीक है, जो ईमेल क्लाइंट होता है हमारा, वो चेक करता है कि वेदर दिस ईमेल इज वैलिड और नॉट, ठीक है? विच इज कॉल्ड एज ईमेल वैलिडेशन एपीआई. So when I say that sohail@appyhub.com, this is my official email, and I want to check in the system that
this email can receive the email or not, right? मतलब मैं तो abc@dcf.com भी डाल दूंगा, which is I'm not sure whether it's a true email or not, और कोई भी fake email डाल दूंगा. I just have to check whether this email will be able to receive a email or not. And to check that, you have to see the MC or you can say MX record, right? जब हम डोमेन पर जाते हैं, कोई भी डोमेन परचेस करते हैं, तो जब हम लोग हमारा डीएनएस रिकॉर्ड देखते हैं, तो यू हैव टू ऐड द एमएक्स रिकॉर्ड to make sure that this email will be able to this domain email will be able to receive an email, right? So sohail@appf.com का mx record available है, that's why he can receive the email, right? And this is an email validation API. So this kind of API is actually used by the companies Sendinblue, Sendingate as well, who basically send the email on the mass amount, बहुत large amount. तो होता क्या है, आपकी रेपुटेशन डाउन हो जाती है अगर आपने फेक ईमेल्स यूज किए, राइट? आपका जो ड्रॉप रेट होता है, बेसिकली हम बाउंस रेट बोलते हैं उसे, अगर आपका ईमेल बाउंस रेट 2.5 या 3% से ज्यादा है, आपकी रेपुटेशन हो जाएगी और समटाइम्स दे ब्लॉक यू एज वेल, क्योंकि आप बहुत ज्यादा स्पैम कर रहे हो. तो उसको रोकने no, then count it on the bounce. Count it like don't send it, so that we will save from the bounce rate, right? So this is something single subscription for the entire catalog. I don't want to pay to anyone other than single person. ठीक है, मैं चाहता हूँ कि एक बंदा है वो सारी चीजें संभाल ले. Yeah, Ankit, do you have a question? Sir, how I'll check the domain? There is fake or a That's how. So you have to call. I'll show you exactly. I'll try to give you an example after that. How you make sure that this is the domain that can have an MX record or not, right? तो हम मैं बताऊंगा उसके बारे में. एक बार ट्रू डेमो देंगे हम ऐप ही आपको, तो उसमें you will get to know that. Okay. So again, like focusing on the developer mindset, utility is operated, maintained, and monitored by a single provider. So I don't have to go on different organization, different pages to check their documentations, apply my credit card, talk to their team to understand my use cases. ठीक है, 10 कंपनी की APIs यूज कर रहा हूँ मैं और 10 लोगों से बात करो, which is again a pain, again a logistic pain, right? And standard integration format. ठीक है, some organization use REST APIs, some use SOAP APIs. ठीक है, और मुझे आता है REST APIs में काम करना, मुझे SOAP API के बारे में पता नहीं है. अगेन अ प्रॉब्लम. ठीक है, अब SOAP API के बारे में पढ़ो. I'm not sure how many of you know that, but SOAP API mostly work in the XML format, right? You have to take input and output in the XML format most of the time, right? तो बट आपको तो जेसन से डील करने की आदत है, ठीक है? एंड जेसन इज द फास्टेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन, मोस्ट रिलायबल वे ऑफ कम्युनिकेशन. तो अगर 10 कंपनीज है, उसमें से 5 अगर सोप यूज कर रही है, 5 जेसन, 5 अगर रेस्ट यूज कर रही है, तो फिर अगेन अ प्रॉब्लम. ठीक है, तो एज अ डेवलपर व्हाट माय रिक्वायरमेंट आर, एक जगह सारी चीजें मिल जाए, लाइक 100 APIs, 100 small utilities APIs I can get on the one plate. Second, द सिंगल सब्सक्रिप्शन फॉर द एंटायर कैटलॉग. ठीक है, एक बार पे कर रहा हूँ और जितनी API यूज कर रहा हूँ उन सबके लिए पे कर सकता हूँ. ठीक है. एंड द थर्ड इज, मुझे अपनी डेटा की जिम्मेदारी एक बंदे को देनी है जिसपे मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ. ठीक है, एंड वी आर अ डच कंपनी, वी आर बेस्ड आउट ऑफ नीदरलैंड्स एट एपीएफ, एंड यूरोपियन कंपनीज are very possessive, or you can say very take data security very seriously, right? So that's how the compliances works at this kind of companies. And the standard integration format, if you know how to make a API request using put, get, post kind of, which is a very basics, you get to learn. Okay, that's how you can communicate with the whole API catalog. And understanding all these problems, AppHub came into the picture. So you want to know all the solutions, and here's why AppHub came into the picture. We are an API catalog where you actually gonna see. I'm happy to show you the demo as well here. Okay, so if you just
go here and you can see. So this is you can say the catalog, and you can see all the API which is available, which comes from the data extraction part, data validation, e-commerce tools, converting currency conversion, EU tax, India. You can even check whether the India postal code is right or not. Most of the delivery company uses this kind of API. The Appidate, the one who was asking me how the API works, I'll give you the example of that as well. Academic email as well. Apple actually checks how how is whether your academic email is correct or not, right? So you can use this kind of APIs, whether it checks ki aapka jo let's suppose sohail@lpu.edu is a valid email for the educational institute or not. ठीक है, मैं शायद परचेज भी कर सकता हूँ वो API को, बट वो डोमेन को, बट आई हैव टू चेक दैट इट इज अ लेजिट ईमेल और नॉट. ठीक है, देन QR app is generate a QR, so you can actually generate a QR code very easily using this kind of APIs. Then file manipulation, file security as well, you can say watermark, uh, barcode generator, resizer, thumbnails, image processing. For image processing you have okay, राइट. फॉर इमेज प्रोसेसिंग वी हैव वेब स्क्रीनशॉट API. तो आप API के थ्रू स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अपनी वेबसाइट का. ठीक है. देन उसके बाद जनरेशन, अगेन कम ऑन जनरेशन. सो you have to show the data using pie chart, using graph, using bar graph, right? So these are all the small utilities available. And again, a category of standard data. So time zones, currencies, countries data. जब हम फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसमें वी हैव टू फिल आवर कंट्री एंड वी हैव टू फिल आवर स्टेट्स एज वेल, राइट? तो हम मोस्टली उसको क्या करते हैं, हार्ड कोड कर देते हैं. बट हेयर यू कैन एक्चुअली गेट दिस काइंड ऑफ APIs. जब आप इंडिया पे रिक्वेस्ट भेजोगे तो यू गेट ऑल द स्टेट्स ऑन सिटीज, ऑल द स्टेट नॉट सिटीज, ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया, राइट? तो जब हम ओवरऑल इस चीज को देखेंगे, कैटलॉग को, सो यू विल अंडरस्टैंड दैट this is somewhere my problem is getting solved, right? And when you go on the pricing section here, you actually get 2 million API requests free of the cost, free for the whole month. Every month you get 2 million API requests, which is more than enough. Matlab, as a student you can't invest that much amount of APIs, I think so. तो ठीक है, एंड 2 मिलियन रिक्वेस्ट आपको फ्री में मिल रही है. एंड एज वेल एज आई गिव यू ऑल द कोड, बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी कॉन्ट्रीब्यूशंस. आई गिव यू द कोड वेयर एक्चुअली यू कैन गेट मोर 50,000 APIs from AppYep actually. ठीक है. And you can store your files as well. So when we say that we are storing the files, you can actually get this kind of storage space available. So as a beginner you get 1 GB of space available, and if you are building a client side application, or you can say enterprises application, this goes on, right? तो बहुत easily हम try करके देखेंगे. So we'll take a demo of our email validation API. ठीक है. email DNS, right? So we were here, and what I'm gonna do is कि मुझे check करना है कि that hello@appyhub.com, or I can see I'll just have to share my whole screen here. Okay. I hope my screen is totally visible now, not just tab, but the whole screen. Can someone acknowledge? Yeah, it is. Right? Okay. So when we open the terminal, right, और यहाँ पर हम एक curl request करेंगे. So curl is basically client URL request, जहाँ पर हम request कर रहे हैं API को कि that we have to give whether this email ID can actually take an email or not. ठीक है. तो मैं यहाँ पर अपना email डाल के देखता हूँ एक बार, sohail@appyhub.com, whether I can check the email, whether I can get an email or not. और जब हम इसको enter press करते हैं, so okay, you need authentication. Okay, so I haven't given my authentication yet, so I have to sign in from my account first. Right, now I have my token available here.
and right. Okay. I'll just make one more request here with sohail@apphub.com and see what the response is for that. Okay. When I press enter, you'll see I'll get an output in form of true. Okay, that this email can take an email. Let's try out something else. ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, I'm not sure किसी ने ये डोमेन को रजिस्टर किया होगा या नहीं किया होगा, तो abc@def.com. ठीक है, I'm not sure कि ये कोई एग्जिस्ट भी करता होगा, बट चेक करके देखते हैं. ठीक है, okay, this exists, this abc@def.com. This def also a kind of domain which is someone took by someone else, which is very common, I guess. So you see here कि हमें email validation API हो गया और बहुत सिंपल सा है, so you don't have to be worry about anything as compared to downloading the. तो इस चीज के लिए हम क्या करते थे, हम एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करते थे, हम अपने कोड में डालते थे, and then documentation पढ़ते थे, and then have to make implementation. वो सारा पेन रिमूव करके हमने API के थ्रू ही ये एक यूटिलिटी का यूज कर लिया, and now you don't have to be worry about who is handling the API, how it will gonna affect me. Or since this is managed by ourselves, we always try to add the features, we always try to improve the API by you can say regular basis. So you get the latest update every time without even worrying about anything. So that's how the utility as a services comes into the picture, right? So as I said to everyone here, you can this is what API Hub is all about. We are an API catalog, and we are solving the utility. We are actually bringing the utility as a service paradigm into the cloud for helping the developers, and as well as if you are a developer and if you want to try out the utilities, you can just go on API Hub and sign up for the single user beginner you can say free plan, and you get the 2 million traffic. And as well as you can use this code appydevs, which you can definitely try out here, right? This will give you more 50,000 API atoms as well. So again, atoms are the currency of API. So whenever one request made, ठीक है, एक request API call को हम एक atom बोलते हैं. तो अगर आप API हिट करते हो, लेट्स से आपने 24 API हिट करी है, तो 24 एटम्स आपके डिडक्ट हो जाते हैं आपके अकाउंट से. ठीक है, why atoms, right? Because what happens generally, let's say if there is a AI API, ठीक है, कि कल कोई AI API इंट्रोड्यूस होती है, तो AI API is a resource intensive, right? Which might be able to take 5 atoms or 10 atoms. So you don't need to be worry about okay how it's gonna exhaust. ठीक है, आपके पास 5 atoms available है, तो you can actually use that API. And this is what a unified catalog comes. You have access to all the catalog, whatever the API, whenever the API you want to use, you can use it. And make sure you can join the Discord community. This is the QR code for the Discord community of API Hub. We would love to see you there. And as well as if you have any problem regarding you can say any issues with the using an API, I would love to help you in that. I'm done from my end. I'm open to questions, guys. Any questions? भैया एक डाउट अराइज हुआ था, जैसे थर्ड पार्टी लाइब्रेरी अगर हम जैसे इंपोर्ट करते हैं अपने इसमें, तो लाइक जैसे किसी और ने बनाया होता है, मतलब उन्होंने किसी और ने बनाया है और हम उसको यूज कर रहे हैं, एपीआई में तो ऐसी सेम फंक्शनैलिटी होती है कि जैसे कोड किसी और ने लिखा है एपीआई का, उसको बस हम फेच कर रहे हैं वहां से, तो दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा फिर थर्ड पार्टी लाइब्रेरी और एपीआई में? लाइब्रेरी आप अपने कोड में डाउनलोड करोगे ना? हाँ जी, पहले तो वो डाउनलोड करनी पड़ेगी, फिर उसको यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, तो जब आप उसको डाउनलोड करोगे तो वो एपीआई आपके स्टोरेज में ऐड हो जाएगा। हाँ, स्टोरेज में ऐड हो जाएगा और वो मेमोरी लेगा।
वो मेमोरी लेगा, ठीक है, और यहाँ पर वो मेमोरी नहीं लेता। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ अपना आउटपुट दिखता है कि हाँ एग्जैक्टली। आ रहा है कि नहीं आ रहा है प्रॉमिस की। या ठीक है। okay sir, please summarize the important topic once. Important topics, okay, so एक बार मैं, ठीक है, हम एक बार important topics पे चले जाते हैं. So basically as a developer, you play with these utilities most of the times, ठीक है. आप हमेशा ट्राई करते हो कि ये सारी छोटी छोटी चीजें बन जाए, so that we can actually work on that, ठीक है. Other than that, okay, I'm so sorry. I'll just paste the link once I complete the summarization. So to help with these problems, you build your own libraries, or actually you depend on someone else, and that comes with the pros and cons. You actually get to solve the problem use cases, but this is more time consuming and maintaining. You build by yourself, and then tech stack implementation and unmaintained projects. Okay, these are the problems, right? And eventually, when you build this on the long term, your code base gets higher. ठीक है, आप वो storage इतनी add कर रखते हो कि at the end में you have to pay for the storage as well, right? So this is all comes with, and for what we need a solution where we can utility catalog, जहाँ पर हम सारी चीजें outsource करते हैं एक तरीके से, that all the problems that I am facing, I want solution of that, but provided by only one organization, right? One company. And that's how APF come into the picture, where Appy Hub gives you the liberty, or you can say the access to access the whole catalog in the very seamless manner, with the communication, easy documentations and everything, right? And that's how, and you can just check it out on the Appy Hub as well. I'll just find the Discord link again. Hey Sohail, how are you? I have a question. Yeah, sure. Please go ahead. So I'm asking like, do like Appy Hub is creating some APIs for on-chain blockchain transactions or something in future? Like, or I'm we not sure can whether in like for the enterprises change. Like I run a foundation, right? So like, is there something like you guys will create APIs for blockchains and for the Web3 decentralized nodes, basically? I'm saying. Is there any future okay. upgradation in it? Well, definitely. I mean, not very specific to Web3, but we are definitely expanding the catalog. If you see the announcement, yesterday we just announced 2 more APIs. In future, we are definitely trying to add more APIs, and like after a year, it will be a plan for us to, you can even host your own APIs as well, right? Let's say whatever the APIs you are actually using in your own language, you would be able to host it on AppyHub, and AppyHub will be the platform for this. So integrating Basically, a Web3 data APIs, marketplace, API marketplace kind of thing. that's a marketplace, but in Yep. marketplace you actually responsible for managing everything, Yeah, I right? got it. Just like so many people are opening their data and Yeah, AI marketplaces right now. right. So So, but here the management will be done by Appia, so you will be just responsible for adding the API and getting the, you can say, money out of it. Got it? So you don't need to be worry about the compliances and everything. That will be handled by yeah, Appia itself. sure. How can I connect with you personally? Like, I have to create some APIs in blockchain if your team or something, like I can connect with Uh, personally. I have given the Discord link here. I have given the Discord link here. You can join it out and ping me over there itself. But as of now, in the Okay. very start, we are not very focused on Web3. Not likely actually. More likely we are still in Web2 space as of now. But I think these are the APIs we actually use. I mean, in the form of QR and file conversion. This is very utility API which actually every developer needs. So even if you are building a smart contract, you might be needing this kind of APIs. I believe so. Okay, thank you. Yeah, but like Yeah. smart contracts are like different things. Like we don't Uh, basically user is anonymous, so we don't take any Definitely, data from. definitely. I mean, we would love to take a, you can say, feedback and requirement from the people. And if you just emphasize, we will be able to host Web3 APIs as well.
Okay, cool. Thank you. Okay. I hope that's the yeah. Thank you so much. Your name is VU, is it? No, it's a View Foundation. You can search it. Like we are making kind of a new market, like beside stocks and crypto. So it's like a Uh, utility-based market. So and we are making AI, so self-servant applications basically in AI. So awesome. in Awesome. future, applications will be automatically upgraded. So we don't need software engineers in future. So like we are running That. our Merkle tree index, some technologies, some new technology we are creating Mhm. and integrating with AI and some GPT-3, Voodoo and other trained databases. And then with human verification, we have to keep training, okay, how the application is made, how we can automate basically creating applications. So that language is called conformal. We're creating a whole new language. And it's a first word AI trained language, and anyone can create Oh, an application um, on that, and that will be governed by the users. And there will be multiple things we added, transaction fees and all. So kind okay. of these things, yeah. Okay, I'm still advocate for the Web3 part of some organizations. But yeah, I mean, would love to interact with you, after this start and see where our Sure. lines, I'll right? I'll drop my LinkedIn. You can. Yep. Sure. Any other person who have a question regarding that? I hope is that understood by everyone why utility as a service exists? Can I get a feedback on it? Because that will help me to prepare better. Did you guys understood what utility as a service stands for? Okay. Thanks, Kirtan. Thanks, Ankit. Thanks, Shumankar. Thanks. All right. Great, great. Thank you so much, guys. This was all the thing. And yeah, let's connect on LinkedIn and as well as uh, you can say on Discord. And we are soon going to launch the ambassador program as well. This is going to be for the developers only. So you can actually take a part in that. Most likely, definitely, right? So uh, would love to, and thanks Krupesh again for inviting me here and contribute my experience through what I have earned, and I also was like a student like you only, who have been part of the communities like Krupesh. And this is where today life takes you to being part of the DevRel team. Okay, so a little bit about Appy Hub. We are a Netherlands-based company. The DevRel team is based of India, but most of the marketing is based of Pakistan. You can say Europe, Greece, Indonesia. We are the very diverse team here. And you can actually look on the job portal as well. If you see that you have there is a position which is matching your experiences, we would love to recommend you for the HR as well. All right. Yeah. So thank you very much, Sohail Bhaiya, for guiding us very well, and thank you so much for taking this session. And yeah, if you guys have any kind of questions, queries, you can join the Discord of EpiHub, and you can find Sohail Bhaiya by using IMS Pathan on any social handles. So thank you very much everyone for joining, and you can also join the 30 days of code challenge. I put it the group link, and yeah, that's it. Thank you very much, and have a nice day. Goodbye. Everyone. Yeah. Happy evening and yeah. Bye.